ગામ સ્માર્ટ બને ન બને પણ ગામ આદર્શ બનવું જોઈએ અને આદર્શના પેરામીટર ઉપર ગામને વિકસિત કરવાનો એક નવો ચીલો ચિતર્યો. સરકારની અલગ અલગ યોજનાઓ આ ગામની અંદર અમલવારી કરી. સ્કૂલના પાકા બિલ્ડિંગો બન્યા, આંગણવાડીના પાકા બિલ્ડિંગો બન્યા, હેલ્થ સેન્ટરની સુવિધા થઈ. પાણી શુદ્ધ મળે એ માટે આરઓ પ્લાન્ટની સુવિધાઓ થઈ. બેંકની ફેસિલિટી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન સાથે થઈ. સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ સાથે લોકોને જોડાયા. કમ્યુનિટી સર્વિસ સેન્ટરો થયા. ઈ-ગ્રામ એટલે જ્યાં કમ્પ્યુટર ઓનલાઈન રેકર્ડની સુવિધાઓ થઈ. આવા કેટલાય નવા આયામો અને નવા વિષયો સાથે આ ગામને એક દેશના આદર્શ ગામની અંદર મૂકવાનું કામ પણ થયું. અમારા ગામના રસ્તા બહુ જ સારી ક્વોલિટીના છે. ટ્રેક્ટર, ટ્રક અને કોઈ પણ ભારે વાહન પણ અહીંથી નીકળી શકે છે ને આજુબાજુની કનેક્ટિવિટી પણ હાઈવેથી એકદમ નજીક પડે છે. પુંસરી ગામમાં તમે દરેક ફળિયામાં, દરેક ગલીમાં તમને સ્ટ્રીટ લાઇટ જોવા મળશે. રાત્રે તમને કોઈ જ પ્રકારનું અહીંયા તકલીફ જેવું થશે નહીં. આ પુંસરી અંદર મારી દુકાન છે, સાડીઓની દુકાન છે, રેડીમેડ બધું જ મળે છે. રાતે મને 10 વાગે પણ કોઈ બોલાવે તો મારે રાતે દુકાન ખોલવી પડે. અમારા ગામમાં કેમેરા લાગ્યા છે પણ અમને કોઈ જાતની ચિંતા નથી. ગામની અંદર સાઉન્ડ સિસ્ટમ પણ છે, કેમેરા લગાવેલા છે, વાઈફાઈ લગાવી છે. દરેક ગલીમાં જોવા જઈએ તો પાકા રસ્તા છે, 100% લોકો જોડે શૌચાલય છે. અમારું ગામ ડિજિટલ ગામ છે. ગામની અંદર તમે અત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ દુકાન પર કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જાઓ તો ગામની અંદર ફોનપેથી, યુનોથી કોઈ પણ વસ્તુ તમને પૈસા ના હોય તો પણ ફોનપેથી કરી શકો છો તમે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે કે જે ઓનલાઈન ફોર્મ નથી ભરી શકતા. પંચાયતના કમ્પ્યુટર ઉપરથી યા આ ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી ઉપરથી પોતાના ઓનલાઈન જોબ માટેના ફોર્મ સબમિટ કરી શકે. કોઈ રિઝલ્ટ આવે તો રિઝલ્ટ પણ ઓનલાઈન જોઈ શકે. કિસાન પોર્ટલ ઉપરથી ખેડૂતો પોતાની સબસિડી માટે ઓનલાઈન પોતાના ફોર્મ ભરી શકે. શાળાની અંદર તમામ રૂમોમાં, તમામ વર્ગખંડોમાં સીસીટીવી કેમેરા છે. એ ઉપરાંત તમામ વર્ગખંડોમાં સ્માર્ટ બોર્ડ પણ આપેલા છે. 351 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે છે. પછી બપોરે મિડ ડે મીલ એ પણ ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા પીરસવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત આજુબાજુના 3-4 ગામના બાળકો પણ શાળા ટ્રાન્સપોર્ટેશન દ્વારા અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે. અમારી શાળામાં દરેક વર્ગમાં સ્માર્ટ ક્લાસ છે અને સાથે સાથે રમવાનું મેદાન પણ. ગામમાં બેંક આવવાથી લોકોને ફાયદા થયા છે. ગામમાં શહેરમાં જવું નથી પડતું. ગામમાં જ બધું સુવિધા થઈ જાય. તહેવારે પણ અહીં પૈસા મળી રહે છે. મોબાઈલથી ઓનલાઈન થઈ જાય છે કે લોકોને પૈસાની લેવડ દેવડ કરીએ તો પણ મોબાઈલથી મળી રહે છે. સખી મંડળનો કોન્સેપ્ટ એ જ છે મહિલાઓનો કે મહિલા એકબીજા સાથે બેસતી થાય, પોતાની વાત શેર કરતી થાય અને પરિણામે ગામડાઓની અંદર ઘણા બધા ઇસ્યુ સાથે એ સંઘર્ષ સાથે જીવતી હોય છે. તો એની સમવયસ્ક એક સખી પ્રકારની બહેનો સાથે મળતી રહે તો એનો કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય એનું શેરિંગ થાય, એનું ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ હોય, એના ઘરના કોઈ ડિસ્પ્યુટ હોય તો એ પણ સોલ્યુશન ગામની અંદર થતું હોય છે. તો સખી મંડળનો રોલ એ મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે, મહિલાઓ માટે ખૂબ મહત્ત્વનું છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈએ પણ એક નવી યોજના આદર્શ ગામ યોજના શરૂ કરી, જેમાં દરેક MP MLA પણ એક ગામ એડોપ્ટ કરે અને એ ગામના વિકાસ માટે સતત પ્રયાસો કરે. અને અત્યારે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં એટલે ભારતભરમાં લગભગ 10,000 યુવા સરપંચો એક મારી ટીમ સાથે જોડાયા અને જેમને પણ પોતાના ગામની અંદર પોતાના ગામમાં કંઈક સારું કરવા માટેની પ્રેરણારૂપ થઈ અને દરેક ગામોની અંદર આ પ્રકારે કામો શરૂ થયા છે. હું માનું છું કે આગામી દિવસોની અંદર ભારતમાં આવા 1 લાખથી વધુ આદર્શ ગામો અને સ્માર્ટ વિલેજો ઉભરીને દેશ સમક્ષ આવશે.
AgriBot is India's first drone that is approved by Quality Council of India, DGCA. It is a multi-purpose drone. It does agrochemical spraying on crops. It does crop health monitoring as part of precision agriculture. It also does seed and urea broadcasting just by changing the adapter. सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी किसानों के लिए अलग तरीके से कुछ नया टेक्नोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेप की जो खेती है इसमें सही टाइम पे सही दवाइयों का एप्लीकेशन करना ये हमारे लिए एक चुनौती का काम रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूरी है इसकी जो कीमत बढ़ रही है उससे फार्मर की जो इनकम है वो बहुत डिक्रीज होती जा रही है। दूसरी बात, हम ट्रैक्टर से सारे स्प्रे लेते हैं अंगूर में तो उसका काफ़ी रिजल्ट ठीक लग रहा है, लेकिन वो जॉब तो टीडियस है, ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे, तो वो कंडीशन में इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ग्रेप ग्रोअर। We wanted to solve some social economical problem that is being faced by our farmer friends. Judicious use of agriculture inputs like water, pesticides. We wanted to increase the productivity by uniform spray. Because drone flies and it never enters into the field, so it saves lot of crops from damage. So if you put all these factors together, the profitability of a farmer increases by 32 to 35% per acre. It is going to at least increase the income of farmers by 50% and realizing the dream of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where he wanted to double the farmers' income. एग्री ड्रोन ये जो नया टेक्नोलॉजी आया है ये भारतीय किसानों के लिए बहुत अच्छा एक अहम एक अंदाज हो सकता है। ड्रोन का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आपको बोई करनी हो तो अभी जो लेबर से कर रहे थे तो वो कर सकते हैं, और फार्मर को जो हानि होती थी दवाई से वो हानि कम हो जाएगी। जो छोटे फार्मर्स रहते 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, उनको उतना बड़ा प्राइस वो बेयर नहीं कर पाएंगे। जिसका 50 एकड़ 25 एकड़ फार्मिंग है उसने लिया, उसका काम होने के बाद वो रेंट पे दे सकता है ना। AgriBot is the drone on which all the experiment testing is done by Ministry of Agriculture, ICRI. The difference between AgriBot and other conventional method is we save 95% time. It takes only 7 minutes to spray in 1 acre as compared to 2 hours, 3 hours in conventional methods. We need 8 to 10 liters of water for spraying in 1 acre. As compared to 200 to 500 liters of water in paddy and sugarcane conventionally. So that way it is saving say like up to 98% of water. The first thing to bring a technology in agriculture sector is education. So we are making people aware of the technology, the benefits, how to use it. The new agri entrepreneurs, they can take benefit of Agri Infra Fund. So under Agri Infra Fund, one can get up to 90% unsecured loan, and that too at 3% subsidized rate of interest. Automation through drones can help the agricultural sector solve problems that have plagued it for many years. Drones can bring efficiency and accuracy in farming processes like crop protection, crop production, as well as crop insurance. The Government of India has been pushing Atmanirbhar Bharat and self-reliance in all sectors of manufacturing, and drones is no exception. Drones is a sunrise sector, and the government recognizes that it is a strategic sector. Asteria's A200 drone is the first micro-category drone certified by the DGCA, which means that its quality is certified under the scheme which is introduced by the Quality Council of India. This makes it fully compliant to the Drone Rules 2021 and makes it available for all stakeholders to use. It's a prerequisite for actually any drone to fly in the country. Drones with advanced imaging sensors can monitor crop growth and can detect stress in crops caused by lack of nutrients, pests, or adverse climate conditions. Drones with automated spraying can help to optimize agricultural inputs and deliver the right inputs at the right place at the right time. For crop insurance purposes, drones can digitize and collect farm records, which can make the settlement process much faster, speedier, and transparent. The A200 drone is specially designed for mapping applications, and it can digitize an area of more than 1 square kilometer in under 30 minutes.
The drone is equipped with a high-resolution imaging sensor and a multispectral sensor which collects data on crop growth, crop stress, and gives valuable insights to these farmers. The drone is also equipped with a high-accuracy GPS sensor which makes sure that the data it captures is accurate and precise, and it can also be used for applications like construction progress monitoring surveys or land surveys. Agriculture drone, to be specific, is going to play important role as far as growth of our country is concerned, and it is the fourth revolution in technology. ગુજરાતમાં ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીનું અપ થવાનું રીઝન એવું છે કે રો મટીરિયલ સપ્લાયઝ, પેકેજિંગ મટીરિયલ અવેલેબિલિટી, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝી અવેલેબલ છે અને સ્કિલ મેનપાવર અવેલેબલ છે. મશીન મેન્યુફેક્ચર વિધિન ધ ગુજરાતમાં ઘણા બધા ખાસા એવા છે જેથી ઇઝીલી એન્વાયરમેન્ટ બિઝનેસ માટે ફેવરેબલ છે. ગુજરાત એક એવું સ્ટેટ છે જેમાં ડાયનામિક વર્સટાઇલ લોકો રહે છે. ઇવન ગુજરાત ઇટસેલ્ફમાં ડિફરન્ટ નેશનાલિટી ઓફ પર્સન આવીને રહે છે, એ બી ફોર મલ્ટિપલ રીઝન. જોબ અવેબિલિટી છે, ઇવન સેફ્ટી ઓફ હ્યુમન છે. તમે જુઓ તો ગુજરાતમાં સેફ્ટી ઇઝ હાઈ ઇન રેશિયો એઝ કમ્પેર ટુ અધર સ્ટેટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ઇવન મેડિસિન સાયન્સમાં એવું છે કે જેટલી બી મેડિસિન્સ હ્યુમન્સ ક્યોરર્સ માટે જોઈએ છે એ બધી મેડિસિન્સ ઇન્ડિયા બનાવે છે, એટલે વર્લ્ડમાં આપણે ઇન્ડિયા તરફથી એક્સપોર્ટ બી કરીએ છીએ. ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે જે દરેક જગ્યાએ એમનું સુપરવિઝન અને એમનું મોનિટરિંગ 100% હોય છે. પહેલાં તો આપણે સમજી લઈએ કે ક્વોલિટી શું છે. તો મેડિસિન ઇટસેલ્ફ એવા એન્વાયરમેન્ટમાં બનવી જોઈએ, એવા માણસો થકી બનવી જોઈએ જે એને બનાવવાની રીત આવડતી હોય. પ્લસ એન્વાયરમેન્ટ એટલે એ મેડિસિન જ્યારે બનતી હોય ત્યારે ટેમ્પરેચર RH નું કંટ્રોલ હોવું જરૂરી છે, કારણ કે એ મેન્ટેન ના હોય તો જે રિક્વાયર્ડ ક્વોલિટી મેડિસિન બનવી જોઈએ એ બને નહીં. આપણને ફ્રૂટફુલ આઉટકમ જે જોઈતું હોય એ આઉટકમ મળે નહીં. એટલે ઘણી કન્ડિશન્સ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે, ત્યાર પછી આપણને ક્વોલિટી મેડિસિન બને છે જે ગુડ ફોર કન્ઝ્યુમિંગ હોય છે. ટેબ્લેટ કેપ્સ્યુલ્સ અમે અહીંયા બનાવીએ છીએ. તો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કે પહેલાં અમે પ્રોક્યોરમેન્ટ કરીએ છીએ. પ્રોક્યોરમેન્ટ બી એવા મેન્યુફેક્ચરર જોડેથી કરીએ છીએ જેની પાસે GMP લાઇસન્સ હોય. GMP એટલે ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસ. એ મેન્યુફેક્ચરરથી માલ લઈને અમે અમારા સ્ટોરેજ એરિયામાં મૂકતા હોઈએ છીએ. સ્ટોરેજ એરિયાની કન્ડિશન્સ બી અમારે મેન્ટેન કરવી પડે છે, કારણ કે એ માલ હું ક્યારે વાપરવાની છું એ મને અત્યારે ખબર નથી. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં અલગ અલગ સ્ટેજ છે: ગ્રેન્યુલેશન, કમ્પ્રેશન, કોટિંગ, કેપ્સ્યુલ હોય તો કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ. ગ્રેન્યુલેશન સ્ટેજ હોય જ્યાં આગળ પાવડર્સ બનાવીએ છીએ, ત્યાં આગળ પાવડર બનાવ્યા પછી એનો ડ્રાઇંગનો એક ટેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. ટેબ્લેટ બને તો ટેબ્લેટ બનતી વખતે અમે ટેબ્લેટનું વેઇટ છે, એની થિકનેસ, હાર્ડનેસ છે, ડિસઇન્ટિગ્રેશન ટાઈમ, એટલે કે ટેબ્લેટ જ્યારે આપણે ખાઈએ તો કેટલા સમયમાં એ ઓગળી જાય છે, ત્યાં આગળ એ ડિસઇન્ટિગ્રેટ થઈ જાય છે. ફાર્મા પ્લાન્ટની અંદર અમે બેઝિકલી ટેકનોલોજીસ બે જગ્યાએ વધારે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. વન ઇઝ ફોર પ્રોસેસીસ જે ફોલો કરીએ છીએ, અને સેકન્ડ ઇઝ ફોર સેફ્ટી ફોર ધ પ્રોસેસ ઓલ્સો એન્ડ સેફ્ટી ફોર ધ પર્સન હુ ઇઝ ડુઈંગ દેટ પ્રોસેસીસ.
મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ઓટોમેટેડ મશીનરીઝ નાવેડે અવેલેબલ થઈ ગયા છે. સપોઝ ગ્રેન્યુલેશન પ્રોસેસ તો હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન્સ જેટલા ઓછા એ રીતનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પાવડર ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ હોય છે, પાવડર ટ્રાન્સફર સિસ્ટમ થ્રુ ગ્રેન્યુલેશન થાય છે. સેફ્ટી ફીચર્સ અવેલેબલ છે, વેરિયસ સેન્સર અવેલેબલ છે, ઇન્ટરલોક્સ અવેલેબલ હોય છે કે જેથી કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોસેસમાં ફોલ્ટ આવે તો એ મશીન સ્ટોપ થઈ જાય છે. વોટર સિસ્ટમમાં ઓટો ડમ્પિંગ સિસ્ટમ હોય છે. કન્ડક્ટિવિટી TOC વધી જાય તો લિમિટ કરતાં પેરામીટર હોય તો ઓટો રિજેક્શન થતી હોય છે. અને HVAC સિસ્ટમમાં ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી અને ડિફરન્શિયલ પ્રેશર જે કંટ્રોલ કરવાનું થયું તે પણ બી ઓટોમેટેશન થઈ ગયું છે કે જે રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ હોય છે જે મશીન ઇટસેલ્ફ કંટ્રોલ કરે છે. પેકિંગમાં બી અમે એ ટેસ્ટ કરીએ કે જ્યારે પેકિંગ થતું હોય ત્યારે એને સીલિંગ કરવામાં આવે તો એ સીલિંગ ટેમ્પરેચર બી એડિક્વેટ હોવું જોઈએ. વધારે ટેમ્પરેચર પર સીલ કરીશું તો એને ઇમ્પેક્ટ અંદર રહેલી ટેબ્લેટ કે કેપ્સ્યુલ પર આવશે, જેના લીધે હોઈ શકે કે એની એફિકસી ઘટી જાય. જે તમને લાગતું હોય કે મને આ હર્ડલ આવે છે, એ હર્ડલ તમે જો સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરો તો તમને એમનું સોલ્યુશન ગવર્મેન્ટ પાસેથી મળી રહે છે. સરકાર તરફથી એક્સપોર્ટમાં જે સ્કીમ આપવામાં આવી છે, એક્સપોર્ટ પ્રમોશન સ્કીમ આવેલી છે, જેથી એક્સપોર્ટને વધારે ફોકસ કરીને ગુજરાત સરકાર તરફથી બી સપોર્ટ આવેલો છે. ગુણવત્તા એક કાર્ય નથી, એ એક આદત છે. એ આદત રૂટીન ફોલો કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આત્મનિર્ભર બની શકે છે. Breast cancer is one of the largest cancer killers in women today. 680,000 women die every year because of this disease. In India alone, 95,000 women die every year. The standard of care, which is mammography, is not really suitable for low and middle income countries. Particularly in India, hand examination is the standard, which means it only detects stage 2 and above. Early detection is very, very critical to save lives. So the whole idea was to make the test as simple as possible, as easy as possible, as comfortable as possible. At Nidamai, we have developed this new method of detecting breast cancer, where we just measure the temperature variations on the chest using a thermal sensor, and we convert this temperature distribution to a cancer health report. All this is done completely automatically with simple skilled workers. So we have both the type of patients. They can be symptomatic, they can be asymptomatic. Symptomatic generally come with a complaint of pain in breast or a lump. It could be benign, it could be malignant, or they have a tendency of having fibroadenomas in their breast since childhood. So these are the symptomatic patients that we receive generally. And asymptomatic are who are just coming for a preventive checkup, just like a routine checkup. I wanted to take mammogram. So some people are telling it's a pain and radiations and all. Some people are telling about the Niramai thermalytics. So I am thinking, what is this thermalytics like that? So I was checking the website also, and after that I taken an appointment also from the website. So it's a very private area where a female goes, relax, cools down, and removes her upper body clothes. And then we do a dedicated upper body cooling. And once the whole body is cool, she gets the instruction from the technician that she's ready for the capturing. And then she faces the thermal sensor, and then the 5 images are captured.
It takes 1 working day for the patient to receive a radiologist certified report. The existing technology have certain limitations like radiation being painful, uncomfortable. Also, they have age limitations. Thermaltix is a pioneer which uses AI on thermal images, and it's completely made in India, and that's where we started. And now we can see the world is looking at us. How can we bring this technology out of India and help them out also? Younger women who have a lot of dense breasts around the world, how do we help them to get screened at early age without any hassle? That's where Nirame also plays an important part. In India, we already have finished around 79,000 plus screenings. We have done installations in 100 plus locations across 20 plus cities. If you see, the device is like portable, you can just wrap it and put it in a backpack and go around. It becomes easy to go to tier 2, tier 3 cities, rural places. So governments have come to us that how can we make this as a screening program for them. We already got a government clearance to do the test in India. We went for CE approval, which allowed us to take a step outside India. And after the CE approval, we started going out of India. Thermaltix is a completely indigenous solution, came out of Nirame. We made sure the quality of the screening has to be good, and that tells from the fact that we have 30 plus international patents, which means the entire AI technology what we have developed is not compromising the quality. And our test is affordable, accessible, completely radiation free, and most importantly, it is privacy aware. Nobody sees the person or touches the person during the test. No touch, no see, no radiation, no pain. This technology is already being adopted by several state governments. Women all across our nation are becoming more self-reliant, and this definitely is going to shape the future of breast health screening. As you know, being a hill state, we have our own challenges and problems. Water has to be lifted in most of the cases to higher elevations because the habitations and households, they are located at higher elevation. पहले हमें पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, बहुत दिक्कतें आती थी, मतलब आधा किलोमीटर दूर से चढ़ाई चढ़ के पानी लाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा कई बार लेडीज़ बीमार होती थी, पानी लाने में बहुत दिक्कत होती थी। बरसात के दिनों में जब बारिश होती थी ना बहुत ज़्यादा, तब रास्ते भी ख़राब हो जाते थे और पानी लाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और सर्दियों में पानी, ठंड की वजह से पानी लाने की भी दिक्कत होती, मन भी नहीं करता था, तब भी लाना पड़ता था कि जा रहा है तो पानी तो चाहिए ही होता है। Fortunately, we are blessed with the good quality of water. But to provide household level water supply in adequate quantity and quality, that has definitely been quite a job for us. Jal Jeevan Mission is a people's driven program, as you know, and where it has to be planned by the people, all the infrastructure from where they will get water. For that, we have to involve all the public in that program, and it was a different approach. It was a demand-driven approach. जिसको भी नल की ज़रूरत होती है, जैसे कोई भी है परिवार है जो बिना नल से रह गया, तो उसको विभाग सारा सामान उपलब्ध करवाता है और लगवा के भी खुद देता है। नल के लगने से हमारे जो पशुओं के लिए पानी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, उन्हें नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए हमें
चाहिए होता था वो नलके से मिल जाता है और हमें अब वो दिक्कत नहीं आती है। अपने कपड़े साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए पानी बाहर से लाना पड़ता था, वो घर में ही मिल जाता है। जो काम मतलब हमें करना पड़ता था ना पानी लाने के लिए, अब वो टाइम बच जाता है और बच्चे मतलब अपना पढ़ाई भी ढंग से कर सकते हैं और हम भी मतलब फ्री होकर कोई और काम कर सकते हैं। We have given training to more than 60,000 women in the state for water quality testing. So it makes them self-reliant also. They can do the testing in their household, they know the quality of the source, they do the sanitary survey, they know what is like the chances of contamination. इससे पहले जॉन्डिस बहुत ज़्यादा होता था, अब जॉन्डिस के केस कम हो चुके हैं। इससे हम हर घर पानी की जो जांच करते हैं उससे पीलिया के केसेस कम है और इसकी जांच हमें एक छोटा सा बाउल दिया जाता है जो हम पीएच की जांच करते हैं। बाउल में पानी लेना है और स्टिप्स उसमें हमें डिप करनी है थोड़ी देर। जैसे जैसे स्टिप्स सूखती जाएंगी वैसे वैसे उसमें कलर आता है, तो 6 से 8 तक अगर वो कलर आता है तो वो पानी पीने योग्य है, अदरवाइज वो पानी पीने योग्य नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे जो हमारे आईपीएच विभाग है वहाँ हम इसके सैंपल भेज सकते हैं। To meet future challenges, we have established a very good network of water quality laboratories. We have more than 60 laboratories in place and most of these laboratories are NABL accredited also. So this gives a kind of a confidence in people that the water they are consuming is fit for drinking purposes also. And at some places we have installed public stand posts with a display of real-time water quality at some tourist places also. So it's free, people can drink water, they know that water is a quality water and it's good for the health also. जैसे सर हमारी कोई पाइपलाइन ब्रेक हो जाती है तो हम विभाग को फ़ोन करेंगे तो जल्दी जो है कर्मचारी भेज के ना उसकी जो है रिपेयर करा देते हैं। जब हमें कोई ऐसी समस्या आती है, लोगों की शिकायत आती है, तो हम वहाँ जाते हैं मौके पे और उसको ठीक तरीके से पूरा काम करके अपना रिपोर्ट विभाग को देते हैं। We have a system of quality monitoring also for the construction schemes. We have divided the work into 2 parts, which is ongoing project or completed project. In ongoing project, we do testing such as cube test. In rebound hammer testing, basically we perform that test in 2 ways, which is applying the hammer vertically or horizontally. सतलुज नदी से हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पानी इसमें से उठाएंगे और जो हम लोग एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे बनाने जा रहे हैं, वहाँ इसको फिर शुद्ध किया जाएगा। रैपिड सैंड फिल्टर वहाँ बन रहा है जिसकी क्षमता 35 लाख लीटर रोजाना है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता में भी अंतर आया है। इससे हमारे बच्चे पहले बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, अब इससे हमारा परिवार सुरक्षित है और बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और स्कूल भी जा पाते हैं। सरकार की इस योजना से हम सभी महिलाओं को बहुत ही सुविधा हो चुकी है। The government wanted this to be an industrial hub, a steel hub. They wanted to create this as a Kalinganagar industrial complex. And most of the steel at that point in time was imported to the country. So there was a need. We didn't understand the word Atmanirbhar in 2005-06, but the vision was there to create a steel plant which would serve the needs of the country. That's how
they roped in Tatas to come here. Before we started this plant, you find most of the stuff was coming from abroad. So our aim was import substitution. We said we will do it. These steels that we are talking about, automotive being one, oil and gas industry being another, construction requires high strength steel. So all these wanted a high strength steel. And that is why we put up this plant, and we are into it, and we have developed almost all the grades that are required for these markets. We have 70 track kilometer of rail lines, and we bring the rakes and unload on our tippling station. So we have 4 tipplers. We have the 2 twin tippler and 2 single tippler. And twin tippler is having features which can rotate 180 degree. If we are rotating 180 degree for unloading the material, then you will not find any material left out in the wagons. We have the 30 kilometer of conveyor within the plant. And we have the 8 raw material yards. Robotics and video analytics was introduced to eliminate man-machine interface and improve safety. Also, the plant was commissioned with a state-of-the-art level 3 production system integrated with level 1, level 2 automation, which has helped us to ramp up the production in record time and also produce the special grades in very quick succession. This is one of the most advanced and state-of-art technology steel plant in the world. Today we are at 3 million ton stage. Now we are adding another 5 million. It will be 8 million after 2024. So we have a central effluent treatment plant. This is the plant which collects the entire wastewater from the plant and reuse them, process them, and send it back to the process again. Apart from that, we are using waste gas boilers. This helps us to use the 100% waste gas generated in the coke oven as well as blast furnace to convert these gases into the energy. We get 135 megawatt of power, which is catering almost 65 to 75% of the plant power requirement. Apart from that, to reduce the water consumption, we have a CDQ system in the plant. We call it coke dry quenching, where we generate a lot of waste energy. That energy again is converted into the by a state-of-art technology turbine system to power. Through that, we are generating almost 10 megawatt of power. We brought in the best technologies available to control air pollution, water pollution, noise pollution. So everything was put in place. Within the radius of these 10 kilometers, we have extensively done CSR activities, been developed where the women are taking the lead and they are trying to earn their livelihoods. So a lot of work on education, a lot of work on livelihoods, improving the infrastructure in and around the site. We have set up a school, a Loyola school. We have set up a 100-bed hospital now, making it 200-bed hospital. Last 2-3 years, we have almost planted 2.03 lakhs of trees all around the plant. Yeah, we are very much concerned about our employees' health and fugitive dust generated in the plant. For that, we have installed multiple tire washing facilities inside the plant, which helps us to reduce the fugitive dust level to an acceptable limit. Yes, the mood is to be self-reliant. Now we are very confident, having been in the steel business for more than 100 years, that we understand steel. We can create facilities, we can run the facilities on our own. That's which I think is the hallmark of the Tatas.
ನಾನು ಕುರ್ಕುಟಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ನೋಯೋದು ಕೈಕಾಲು ಹರಿಯೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರೋತ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರು ನಾವು ಮೇಡಮ್ ರೀ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹಾಂ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋರು ಮೇಡಮ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನನಗೆ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒನ್ನೇಕ್ ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಇದೇನಂತಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಹಂಗಿತ್ತು. बच्चे 9 बजे से 5:15 बजे तक हमारे स्कूल में रहते हैं। गर्ल्स हाई स्कूल होने की वजह से लड़कियां ही रहते हैं यहाँ पे। उस दौरान बच्चों को कई सारी ज़रूरतें होते हैं। जब उसमें एक पॉइंट आता है वो है शौचालय बच्चों के लिए। हमारे स्कूल को बच्चियाँ खासकर गांव के एरिया से आती हैं। अपने घरेलू तौर पर कपड़ा यूज़ करते थे, लेकिन उसमें बच्चों को अनकम्फर्टेबल महसूस होता था, इसलिए बच्चे एब्सेंट हो जाते थे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से शुचि पैड्स और पिंक टॉयलेट दिया गया है बच्चों को। बच्चे शुचि पैड्स तो यूज़ करते हैं। हर दिन में जब मंथली पीरियड होता है तो दिन में 3 मरतबा पैड्स को चेंज करना है। लेकिन अगर अच्छा टॉयलेट नहीं होता तो बच्चे नहीं कर सकते थे, उनको शर्म महसूस होती थी और डिस्पोज करने में मुश्किल भी आती थी। Pink toilet is exclusively for girl children. It's new initiative in Karnataka, especially in Gadag district. Totally we have taken 62 pink toilets that is purely for girl children. जब जून महीने से स्कूल स्टार्ट होते हैं तभी हम लोग बच्चों को बुला के एक डेमो देते हैं, पैड्स को कैसे यूज़ करना है और कैसे डिस्पोज करना है। ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿನೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಮಷಿನ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. पिंक टॉयलेट में एक इंसिनेटर लगा हुआ है, की वजह से बच्चे आसानी के साथ यूज़ किया हुआ सैनिटरी नैपकिन उस इंसिनेटर मशीन में डाल के स्विच ऑन कर देते हैं। वो जल जाता है, फिर जलने के बाद उसकी ऐश ट्रे में जमा होती है और वो ऐश को ले जाके एक बाहर वाले पिट में डाल के गाड़ देते हैं। It has helped a lot in preventing the pollution of the soil and earth. ಆದರೆ ಈಗ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸೈತಿ. ಆರಾಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಬೋದು. Total unit cost of the each pink toilet is 6 lakhs. NREGA fund can be used and also it can be converged with the funds of the Swachh Bharat mission. Gadag district has, for example, 70% of the population are residing in rural. More number of schools and colleges are in rural area only. So to avoid open defecation, we have to construct more number of pink toilets that is exclusively for women and girl children. ऐसा पिंक टॉयलेट हर जगह हर स्कूल में होना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ सकें और देश की अभिवृद्धि में अपना साथ दे सकें। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಐತಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗು ಹಂಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಈ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನೂ ನಿರ್ಮಿಸ್ಬೇಕಂತಂದು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪಿಂಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರಿತ ಅನಿಸಿದೆ. पिंक टॉयलेट सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से बच्चे बिना हिचकिचाहट के किसी भी वक्त स्कूल को आ सकते हैं और अपने टीचर से खुलकर बात कर सकते हैं। Separate pink toilets are very much required because without hesitation ladies can use the toilet especially in the period of menstruation. हाँ, ये बात सच है, गुणवत्ता ही आत्मनिर्भर बनाती है।
the last few years, Meghalaya has used technology in terms of governance and to improve the governance so that we are able to deliver services better to the people and strive to make Meghalaya one of the better states in the country and make it better today and the best tomorrow. There are 64 departments in the government of Meghalaya. All the people who sit here, 70% of the work that they are doing is they are processing proposals basically. And they have been used to doing this on physical files forever. This entire e-proposal, in fact, is part of the entire enterprise architecture that we are planning for the governance. The objective of all of this is to be able to provide better services at a much faster pace and much more efficiently to the grassroots people. In the state of Meghalaya, we are very fortunate to have a very, very visionary and forward-looking Chief Minister, Shri Conrad K. Sangma, who is a keen believer in technology and its ability to solve several of the problems in governance. Just the transparency of everybody knowing where a certain proposal is, how long it is lying at a certain level, and why it is lying there at those number of days. So to achieve these three things, we thought we should move from a digital system to a completely electronic system. We made it mandatory that all departments should transition to this e-proposal system, and all proposals should be done on the computer, on the platform. In this system, you don't need to do anything. A file reaches the inbox of a particular individual, an officer, a staff. So without having to create worksheet and all, that officer or staff will just immediately look at the file and start writing notes and then send to the next higher authority. And then plus we have other added functionality, value addition, such as automatic generation of sanctions, automatic generation of minutes of meetings. So these are the things that has really make a difference. In the proposal system, all the information, these are readily available. The department, instead of sending the file, they all have to do is upload the information in the system. Whatever information that I want, I can just immediately go to the search engine and I get the information at the click of a button. Today, proposals which used to take up to 3 months to 4 months are being cleared within a matter of 5 days to 6 days. And in spite of even having holidays or being in Sunday, if the proposals are very important, then they can be cleared immediately. So that's the advantage of technology. This is the next big tech intervention that we are working on, which is basically citizen-centric service delivery to create one citizen-facing portal of the government through which all services become available. The vision is basically that citizens need not have to go to different offices to access various things. So all the services should be available through a digitally enabled platform, through a system. So when we won the award for the project at the ODYSSEY Summit, it was a wonderful, ecstatic kind of opportunity to be the only project from India which has won this year. In Meghalaya, under our Chief Minister's initiative, we have something called Smart Village Movement. So we have a collaboration with UC Berkeley in US. We were trying to pilot new technologies for better healthcare, education, a lot of livelihoods, and etc. We came up with an idea that we'll start a drone station. So this will be a command and control center. Also, like a railway station, a bus station, we will have a drone station where we will plan flights from this particular location to many other locations where we can deliver drugs, and we can use reverse logistics also. It reduces time, it increases efficiency, it also makes healthcare much more closer to people. So with that, we launched this drone station.
We are trying to see if it will be a full alternate to regular transportation, particularly with Meghalaya, where the aerial distance from point A to point B is very close, but by road it might take a lot of time. Every state, in fact, in the country today is doing some kind of technology implementation for better governance at different levels. So all states must learn from each other. एक्सप्रेसवे को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी एक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे में सुविधाएं होनी चाहिए, वो सब सारी सुविधाएं इन एक्सप्रेसवेज पर मौजूद हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिस पर आपको एक बेहतरीन राइडिंग क्वालिटी मिलती है। और मैं बताना चाहूँगा कि यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विजन रहा है, जो कि पूरे प्रदेश को एक्सप्रेसवेज के माध्यम से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। ये जो पूरा 341 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, इसमें हमें जो ज़मीन खरीदनी थी वो लगभग 64,000 फार्मर्स से लगभग 3,800 हेक्टेयर के करीब ज़मीन की परचेज़ हम लोगों को करनी थी। 11 महीने का हम लोगों ने टारगेट रखा था। तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मोबिलाइज़ करके हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से बिना किसी धरना प्रदर्शन के वी वर एबल टू कंप्लीट दिस टारगेट। एक इसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे बुंदेलखंड में भी हम लोगों ने एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया। पूर्वांचल में भी ये लोकार्पण हुआ इसका। ये दोनों एरियाज़ ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बड़े पिछड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ लोगों की अब रुचि बढ़ी है क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ पे अब इंश्योर हो गई है। अब ये एक्सप्रेसवे बन जाने से एडवांटेज यही है कि हैवी वेहिकुलर ट्रैफिक को, गुड्स के लिए मूवमेंट को, ह्यूमंस के मूवमेंट को जो है एक गतिशीलता मिली है और वो तेज़ी से जो है यहाँ से ट्रांजिट हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर मेरा ढाबा है। यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, चाय पानी जो भी अपना लेना होता है अपना लेता है, खाता पीता है। ट्रक वाले जो आते हैं उनका अपना खाना पीना रहता है। अब ये हाईवे पे ये एक फैसिलिटी ये हो गई कि यहाँ पे जब पब्लिक चलती है तो बिल्कुल श्योर होकर चलती है कि सुरक्षित हैं हम। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, कैमरा हर 1-2 किलोमीटर में कैमरा लग रहा है। कैमरे से सब पूरी वॉच किया जाता है। यूपीडा वाले गार्ड सिक्योरिटी हैं। कहीं ना कहीं कोई बात होती तुरंत कंट्रोल रूम पे कॉल जाती है और उसका तुरंत सॉल्यूशन होता है। कि वहाँ के निवासीगण हैं, क्योंकि सर्विस लेन्स वगैरह अब अच्छी बन गई हैं तो उनके लिए भी ये बहुत सुविधा हो गई है। उनके भी उद्योग धंधे धीरे धीरे पनपेंगे क्योंकि अब उनके लिए भी मूवमेंट बहुत आसान हो गया है और वो अपने लिए भी रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है लेकर के जा सकते हैं। चाइनीज बाई चाइनीज पॉइंट पे जो भी गाड़ी ख़राब होती है हमारे पास कंट्रोल रूम द्वारा सूचना आती है। कस्टमर के पास जाके जो है उनका टायर रिपेयरिंग करते पंचर बनाते हैं। तो हमारे जरिए मान चलिए कि जो है मैकेनिक भी है, गाड़ी कार मैकेनिक भी है, इंजन मिस्त्री भी है, सब इसी तरह जुड़े हुए हैं। सर्किल जो है एक दूसरे के सहारे सब चल रहे हैं। प्रत्येक पैकेज में हमारी 2 इनोवा व्हीकल्स पेट्रोलिंग व्हीकल्स के रूप में ये 24 आवर्स कार्यरत हैं। इस पे हमारे सुरक्षा गार्ड, हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं और हमारे सीओ हैं, ये सब अनवरत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम उनको पूरी सिक्योरिटी कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, उनकी व्हीकल्स में ब्रेकडाउन होने की स्थिति में उनको तुरंत हम ठीक करा करके उनको रवाना कर सकें। और इसमें तत्काल सूचना मिलने पर एक रिस्पांस टाइम हमारा बिल्कुल मिनिमम 5 मिनट से भी नीचे है। ये TMS में जो जिस टेक्नोलॉजी का यूज हम करने जा रहे हैं, इसमें 400 के आसपास 400 कैमरे यहाँ पर लगेंगे
और 1 किलोमीटर की रेंज के डाटा को हमारा एक कैमरा कवर करेगा। स्पीड, ओवर स्पीड और एक्सीडेंट के लिए जो वीडियोज हैं, ये सारे कैमरे हमें यही कंट्रोल रूम में प्रोवाइड करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पीआरबी के द्वारा 24 घंटा सेवा दी जाती है, जो 2 शिफ्टों में है। एक शिफ्ट 12 घंटा ड्यूटी करती है, अल्टरनेट दूसरा चेंज करता है उसको। किसी भी दुर्घटना के लोकेशन पे हम 5 से या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं और वहां से तुरंत सीएनसी के लिए ले जाते हैं। हमारी एम्बुलेंस इस हाईवे पे 24 घंटा तैनात रहती है और हम एकदम तत्पर रहते हैं। पहले हम लोगों को लखनऊ आने के लिए कम से कम 8 घंटा 9 घंटा मिनिमम लगता था। ये ठंडी के सीजन में तो हम लोगों को शायद 12 घंटा भी लग जाता। मगर अब जो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पर जब बलिया से मैं इन होता हूँ, चढ़ता हूँ, चढ़ने के बाद मैं जब इधर आता हूँ तो मात्र 5 घंटे में मैं लखनऊ टच कर लेता हूँ। सारे चीज़ों की व्यवस्था है। आप जगह जगह पर हॉल्ट मिलेगा, जगह जगह पर चाय स्टॉल है और जगह जगह पर आप लोगों को वॉशरूम मिल रहा है। इतनी सारी व्यवस्था है कि हम लोगों को ये नहीं लगता है कि हम लोग इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि लंदन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इन एक्सप्रेसवेज के माध्यम से शहरों की दूरियां कम हो रही हैं और जो हमारे लोकल उत्पाद हैं उनको कहीं न कहीं एक बाजार उपलब्ध हो रहा है। तो इससे आत्मनिर्भरता की दिशा में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मोटे अनाज को ग्रहण करने का चलन भारतवर्ष में शताब्दियों से रहा है। मोटे अनाज के सेवन से हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फाइबर्स हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। FSSAI की ओर से ईट राइट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम विगत वर्षों में चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम के तहत भी सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में आम जनमानस को, खरीदार को, इवन दुकानदार को भी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जाकर बताते हैं। किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध हो, इसलिए गवर्नमेंट ने हमको सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी हमारे एपीओ को प्रदान किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी फसल किसानों के द्वारा उत्पादित हो, मंडियों तक पहुंचे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बने वो सभी प्रोडक्ट्स जो है शुद्ध हों, स्वच्छ हों और मिलावट से रहित हों। मिलेट की खेती करने से हमको 2 प्रकार से फायदा हो सकता है। पहला तो इसका अच्छा बीज हम तैयार करें। बीज तैयार करने से उत्पादकता बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से रेट बढ़ेगा और रेट बढ़ेगा तो किसान आत्मनिर्भर होगा। जनपद में पहली बार सरकार ने बाजरे की खरीद की शुरुआत की है और हम लोगों ने 2517 MT खरीद किया है। ये बाजरे की खरीद हुई जिसमें 592 लाख रुपए का किसानों का भुगतान हुआ है। किसान इसको लेके बड़े उत्साहित हैं और संभव है कि अगले वर्ष जो है मोटे अनाज का उत्पादन और तेजी के साथ बढ़े। मक्का भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है और बाजरा भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो मोटे अनाज का यहाँ बहुत ही भविष्य है और आने वाले समय में उम्मीद है कि एक अच्छा मार्केट कासगंज के आसपास इसको लेकर ये डेवलप होगा। जैसे मक्का की फसल होती है तो मक्का लेके आता है और मंडी समिति के अधिकारियों द्वारा नीलामी के द्वारा फिर उसको मक्का को विक्रय किया जाता है। हम लोग उसको क्रय करके और आगे जो जहाँ भी डिमांड होती है वहाँ बेचते हैं। अभी पशुहार में आता है तो पशुहार के हिसाब से कम रेट मिलता है हमारे किसानों को। जब ये हमारे खाने पीने में आएगा तो उससे किसान को लाभ रहेगा।
आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी कंपनियां जैसे बाजरे से बिस्कुट बन रही है, नूडल्स बन रहे हैं, केक बन रहे हैं, तो इन चीज़ों का अगर मार्केट तैयार हो रहा है धीरे धीरे, जैसे वो रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, तो निश्चित है इसके जो हमारा मूल्य है इसमें बढ़ोतरी होगी। अब जब बढ़ोतरी होगी तो किसान को फायदा होगा। बाजरा की खेती हमारे जनपद में लगभग 39,000 हेक्टेयर में लास्ट ईयर हुई थी। इस वर्ष उसमें लगभग 2,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। और चूँकि ये वर्ष हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है और इसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो निसंदेह किसानों को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा। मोटे अनाज से कासगंज के, और न केवल कासगंज से बल्कि पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसान इससे आत्मनिर्भर होंगे और उनकी आय बढ़ेगी। इस वर्ष हमारे यहाँ से एक और योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित कराई जा रही है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसमें हमें गंगा के किनारे वाले गाँवों में 34 क्लस्टर बनाए हैं हम लोगों ने, और वो किसान प्राकृतिक खेती करेंगे। तो हमारे विभाग द्वारा जितने भी मेला गोष्ठी या जो भी प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध होते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को और आम जनता को हमारे जो मिलेट्स हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में लोगों को अवेयर करें और वो अपनी डाइट में उसको शामिल करें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रण है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो हम लोग इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से मिलेट्स के साथ साथ जो दलहनी फसलें हैं, जैसे बाजरा में हम मूंग, उर्द की आदि की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो किसानों को इससे डबल इनकम होगी और निश्चित रूप से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।